This video is sponsored by BuyMode shopping app. BuyMode e-shopping application is one of the online shopping app now available on Play Store and App Store. BuyMode e-shopping. Hi friends, once again welcome back to my YouTube channel Chase Your Dreams. तो बहुत लोगों ने ड्रीम्स अचीव कर ली होगी आज तक, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग सफर में हैं और बहुत लोग शुरू करने वाले हैं। तो उन सभी के लिए, चाहे उन्होंने शुरू करा हो, चाहे खत्म किया हो, चाहे कुछ अचीव किया हो, नहीं किया हो, जो कर रहे हो, उन सब के लिए आज मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। रिमेंबर, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था यू शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टुवर्ड्स योर गोल्स और योर एस्पेक्ट्स और योर परसेप्शन और एनी ऑफ द ऑब्स्टैकल्स दैट यू हैव टू क्लियर। यू ऑलवेज नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। डू यू रिमेंबर? बट one more important thing that I didn't tell you, that there is something called as managing your negative influences. Got it? So what is this negative influence? For example, you don't have good friends. You have friends but not so good who are going to support you achieve something. But there will be some people who will try to pull you down. They'll say, bhai isse to nahi hoga. You cannot do it. You're not capable of doing it. So there will be so many people in the world who will be pulling you down by discouraging you or breaking your morale. So you need to manage that negative influence. It cannot be anyone, your relatives. Like, see, my son has become so and so, but your son, see where he is. He's not able to achieve anything. He's not able to get a good job. He's not able to get good marks in studies or exams. You need to very well manage these negative influences. How will you do it? The first question that arises is, how are you going to manage these negative influences that are going to be possessed on you? The best example to shut those mouth is to keep mum when they are saying, and you just get into that so much that you show with the results. Someone has told very rightly, someone has rightly said that action speaks louder than words. आप उसको चुप कर दो, उल्टा सीधा बोल दो, you say whatever you want to say, rubbish you just take out from your mouth and just say, blabber it. What are you going to achieve it? They're going to somewhere else go and show. Today they're going to tell at your house, tomorrow they'll go to the next house and they say, see, उनका बेटा तो ऐसा ऐसा है, they can't achieve anything, but बस बोलते रहते हैं. But what will happen if you actually prove it by the results? You keep mum that time. After 1 month, 2 months, whenever you want to show that, just be the best in that. फिर आप बोलोगे वो फिर भी दूसरे घर जाके झूठ बोलेंगे, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन दे गो एंड से कि उनका बेटा ऐसा ऐसा नहीं कर सकता, दोस पीपल विल आल्सो से, नो यू आर रॉन्ग, ही हैज प्रूव्ड दैट ही कैन डू इट. We were wrong who were thinking something bad about that guy, or let it be a woman or a man or a girl or a boy. Irrespective of that, they will be saying that yes, we were wrong and he or she has done it. इसलिए बोलते हैं, आप बातों में आप उनको बोल दो आपका मुंह खराब होगा, वो लोग फिर भी नहीं मानेंगे, वो लोग दो बात कहीं और जाके करेंगे. बेटर यू शो दैट रिजल्ट. सो यू नीड टू मैनेज दीज नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस. आप उनको अपने अंदर मत बैठाओ. सम पीपल व्हाट दे डू ना, आप उनको कुछ बुरा भला बोलो ना, वो सोचने लगते हैं भाई मैं बुरा हूं, मेरे से नहीं होगा, आई एम नॉट एबल टू डू, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट. एंड लिटरली दैट टाइम दोस पीपल आर नॉट एबल टू डू दैट. व्हाई? बिकॉज वो अपने आप ही सोच लेते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता है दैट दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद व्हाट दे एक्चुअली कैन डू. So I request you guys, never ever let that negative influence come on you. इतना हावी कभी मत होने देना. I hope you are clear with this. So with this, I'll meet you in next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.